Hello everyone. Hi guys. Hi Sasmita. Good afternoon. Hey dear ones, where are you all? So students, be fast. We actually need to start our session. Hi Ravi Gupta, good afternoon. Hi Rahul, good afternoon. So be quick, let your friends know that the session has started, and it's today what we are going to talk about: Organic Chemistry Phase 4 JEE Mains 2021. Hi Ankit Raj, hello Mr. Shiva, hi Vansh. Hello, Nebil. Okay. Yes, Rahul. The dates are extended. But why are you actually so much sad? You should actually think that, yeah, it's good that you are getting much time now for your preparation, isn't it? Okay. Hi, Mr. Tiwari. Hi, Shri Harikota. Okay, fine. So, guys. Okay. Congratulations, Ankit. Fine. So, dear ones, today's session is all about organic chemistry, and I'm Rakhi, your mentor for this particular session, wherein I have actually come up with some few important questions of organic chemistry. Okay, the chemistry wherein we actually talk about mechanisms, and mechanisms. Isn't it? Yes, of course. So, let's start our session. And yeah, there is a very big news for all of you that the dates are extended. Now the session 1 is going to actually take place in June, and session 2 will be there in July. So you are actually getting some more time for your preparation. Fine? Fine. So here we go with our session today, and let me tell you one thing, what all particular chapters we are going to cover through the questions we'll be discussing today. Fine. So it's the amines, biomolecules, stereochemistry, hydrocarbons, aldehydes, ketones and carboxylic acid, alcohols, phenols and ethers, and last but not the least, haloalkanes and haloarenes. I hope that you'll enjoy this particular session. Yeah, Ravi, let's begin our session. But before that, let me actually tell you that please, if you like the session, hit the like button, share this particular session with your friends among your peer groups so that they can also have the advantage of the same basically. So over here, let me tell you one thing, for the notifications of the classes which will be actually going to take place, I'll just request you all to subscribe the channel. Fine, bye-bye Mr. Ankit, and yeah, here we are with the very first question, and let's start our session. It's question number 1. Let me actually talk about it. So, the major product formed in the following reaction is, Fine? Fine. So over here, let me know the answer. Bombard the comment box with your answers. Yes, Rahul, I've actually started. Hi, Mr. Fighter. Good afternoon. Welcome to the class. So, it's the question in front of you. Just have a look on the question. Be ready. I will not say be ready because you are actually the grown-up kids. You should have pen and paper with you and solve this question and let me know the answer. Fine? So, yeah. Come on, dear ones. So, this is the question. Note it down, and here are the options A, B, C, and D. It's A, it's B. Welcome, Ayushman. Good afternoon. And here are the options in front of you. Come on. Yes, here are the options. Well, first of all, you need to solve the question and then you should actually search for the options. Isn't it? Yes, of course. So, let me actually talk about the same. So, it's the thionyl chloride we have taken, and then we are actually going to add CH3OH. So this is our reactant which actually have COOH group, NH2 group, and this particular rings.
So what is the answer for this particular question? Herein, let me tell you one thing, that it is a kind of a Dason's reaction, wherein I know that in Dason's reaction, it's the conversion of alcohol to the corresponding alkyl halide. But over here, we are actually talking about COOH group. So we can consider it to be a kind of a Dason's reaction, and herein, this thionyl chloride will react with COOH group, and there will be the formation, initially there will be the formation of COCl, acid chloride. Yes. Fine. So here we are. So initially what we are actually going to have, see, this is the product initially I'm going to talk about. This is NH, here in this and this, then this is CH2, it's NH2 and it will be C double bond O and it is Cl. Okay, this is what we are actually getting initially, plus HCl. Now what we can do, we'll be actually adding now CH3OH, fine. But before that, let me tell you one thing and ask you that which of the following nitrogen, NH2 or the NH group which is in the ring, which among these two is more basic? Which among these two is more basic? Just let me know. Okay. Well, yesterday also we talked about the same question initially, but there was some glitch due to which the session was cancelled. So yes, it's second without the ring. Absolutely right, Hirsch. Why so? Because see, over here the lone pairs of electrons in the nitrogen, they are more basic in comparison to the lone pair of electrons on the nitrogen which is in the ring. Reason being, the lone pair is in conjugation. The ring is aromatic. So lone pair here is less basic in the ring. Okay. So actually we do have the acidic medium because of this HCl, isn't it? Okay. And also we are actually having CH3OH group. Now this CH3OH group is going to behave as a nucleophile. It is going to behave as a nucleophile and it is going to attack on this carbonyl carbon and the leaving group chlorine is going to leave. Secondly, since this particular lone pair of electron on the nitrogen is more basic, okay, and HCl being acid, so there will be the formation of salt. So at the end what we are going to get is, just have a look over here, this is the main major product, that is what we are going to have with us. So it's CH2 and then it will be over here NH2.HCl, fine, and over here it's C double bond O, OCH3. So this is our main major product, isn't it? So यहाँ क्या बना है? Over here what is formed? It's the salt formation that has taken place. So according to it, let me actually go through it. It's not option number A, it's not option number B, rather it's option number C, the right answer of the question asked for, and D is also out of the league. So yes, Aakash, you were right, it's option number C, the right answer for the question asked for. Yes, good ones. So let's move ahead and talk about the next question, the second question of this session. Here we are with the second question, but before that, anyone, any doubt regarding the question which I have discussed? Yeah, Ayushman, it's option number C. So let's move ahead and let's talk about option number, not option number, now it's the question number 2. Guys, hello. Hey guys, come on, dear ones. There should be some hustle bustle in the class with the maintenance of discipline, I believe. So everything clear? I mean to say, the doubts regarding the questions, are they clear? Shall I move ahead with question number 2? And here is question number 2 in front of you. Okay, Vidya, yes. So match the list 1 with list 2. Fine, cool. So it's the industrial process in the list 1 and the application of it in the list 2. We need to match them basically. Now what to do and what not to do? Come on, dear ones. Tell me the answer of this particular question. Bombard the comment box with your answers, and I just really want the right answers. Well, if you're giving the wrong answers, I'm here to give you the correct solution of the questions asked for. So over here, industrial processes, if I want to talk about. Okay. See, if I just talk about the first industrial process, it's CH3, COO, CH2, CH3.
which is actually giving us CH3 CH2 OH. Then it's CH3 COO CH3 giving us the corresponding aldehyde CH3 CHO. It's option number C, okay, which is saying that it's I'm really sorry. Okay, so it's CH3CN, which is actually getting transformed into CH3CHO, and D says it's CH3CN, which basically gives us CH3CO CH3. Okay, fine. So you are saying, Aakash, that for the option C, that means for the process C, it's the fourth, that is the right answer. Okay, fine. And for D, Ayushman says it's the very first Grignard reagent. For A, you are saying it's third, diabyl. Okay, so let's move ahead and talk about the same over here. So the very first process is basically the acid hydrolysis of ester. It's the acid hydrolysis of ester, wherein it's CH3COO CH2CH3, fine, which when it undergoes acidic hydrolysis, H3O positive basically, will be giving us the corresponding alcohol and acid, fine. So it's CH3 C double bond O, it's O, and CH2 CH3. So this bond is going to break, and hence we are going to get our corresponding products, the acid and the alcohol. Fine, so this is the very first process, and these are the reagents to be used over here, acidic hydrolysis. Okay, moving ahead and talking about the next industrial process, wherein it's R C double bond O R. Okay, if I just talk about the second process, wherein it was saying it's CH3 C double bond O, okay, OCH3, giving us the corresponding aldehyde CH3CHO. So it's the conversion of ester into corresponding aldehyde, and the reducing agent over here will be diisobutyl aluminium hydride, followed by hydrolysis. So you can just have a look over here. I want to say for the second process, for the preparation of aldehydes, for the conversion of esters into the aldehydes, it's diisobutyl aluminium hydride, the reducing agent. Fine, isn't it? Yeah, of course. Moving ahead and talking about the next set of a reaction, wherein we are going to talk about the Stephen's reaction. And in Stephen's reaction, what happens is the conversion of nitrile into aldehyde. Conversion of nitrile into aldehyde. So initially what is going to form? It's imine hydrochloride that is going to form. It's imine hydrochloride that is going to form, which on then hydrolysis gives us, acidic hydrolysis gives us the corresponding aldehyde. Isn't it? Yes, of course. So this is the Stephen's reaction. Well, if I just talk about the another set of the reaction, wherein it's the conversion of ketone from, not conversion of ketone, it's the preparation of ketone from nitriles. So it's RCN, okay, plus R-MgX, fine. Acidic hydrolysis giving us the corresponding ketone plus NH4 positive plus Mg2 positive plus X. Okay, so you can just have a look. It's the Grignard reagent which is going to convert this nitrile into the corresponding ketone. Okay, followed by acidic hydrolysis, isn't it? Am I making the things clear to you over here? Fine, so the conversion of nitrile into ketone with the help of Grignard reagent. Fine, one more thing I just want to say, that cyanides, they can be converted to aldehydes. Okay, in the previous reaction, if I just talk about, wherein the cyanide would convert it into the aldehyde with the help of the stannous chloride basically. So cyanides can also be converted to aldehydes with the help of diisobutyl aluminium hydride, followed by hydrolysis as well. Fine, but over here we will be going with the more appropriate answer for the question asked for. So यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा, it will be what? Fine, so for the option A, I'll just say it's acidic hydrolysis, A2, okay. Then if I just talk about B, for B it's third. If I just talk about option number C, it's fourth, okay. And for option number D, it's 1.
So according to it, it's option number A, the right answer for the question asked for. Option A हमारा सही जवाब है. So, okay, A2, B3, C4 and D1. Yes, Ayushman. Absolutely, Aakash. The right answer to be set for. So, चलिए move on करते हैं next third question पे. I don't believe इस particular question में किसी को कोई दिक्कत होगी. It was the reagents we need to talk about for the following conversions given to us. तो चलिए move करते हैं question number 3 की तरफ. Here is question number 3. The number of stereoisomers possible for 1,2 dimethyl cyclopropane is? A very good question and an easy question too. So is it 2, 3, 1 or 4? Just let me know. The number of stereoisomers possible for 1,2 dimethyl cyclopropane. बताइए इसका आंसर. चलिए, will it be 2, 3, 1 or 4? शीलानाथ जी, आयुष्मान, रवि, आकाश, राहुल, come on dear ones, bug up. जल्दी से बताइए इसका आंसर. फटाफट से पहले स्ट्रक्चर लिखिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का and then tell me how many number of stereoisomers are possible for 1,2 dimethyl cyclopropane. जल्दी से. Guys, am I audible and visible to you? See, I'm asking this in the mid of the session, reason being, you are actually not replying me anything over here in the chat box. So what should I do? I need to ask, am I audible or visible to you or not? Just let me know. Yes, okay. Option number B. Ashish says, I'm sorry, Ayushman says it's option number B. Okay, Harsh says it's option number D. Okay, fine. So let's move ahead and talk about the same thing over here. Well, if I just talk about, see, isomers which possess the same molecular and structural formula, isomers which do have or which possesses the same molecular and structural formula but differ in the arrangement of the atoms or groups, but actually differ in the arrangement of atoms or groups in space due to restricted rotation. So what should we say about them? Obviously, since we over here are talking about what? Stereoisomers. So over here, 1,2 dimethyl, if I just talk about 1,2 dimethyl cyclopropane, this is gonna be the structure. Okay, it's a CH3 over here and it's CH3 over here. For this particular compound, we can have what? We can have the cis form, we can have the cis form, this is the cis form. Okay, fine, this is the cis form. Wherein, if I just talk about the trans form now, if I just talk about the trans form now, fine, so this is the trans form. This trans form is optically active. It is optically active. So if it is optically active, so why? Because over here there is no plane of symmetry, no center of symmetry. So if I just take its mirror image, if it is optically active, we'll be talking about its mirror image. Fine. So in total, if I just talk about, this is trans form and this is cis form. Fine. So in total, if I just talk about being this trans form optically active, it will do have the mirror image. So accounting all these three, I'll say no, Shilanaji. It's basically 3 stereoisomers possible for 1,2 dimethyl cyclopropane. Isn't it? Yeah. So it's the cis form, trans form is optically active, and if it's optically active, we'll be having the mirror image accounting for all the 3 particular stereoisomers. So it's option number, let me tell you, B, the right answer for the question asked for. बताइए, बोला, सही बोला? Yes. बिल्कुल क्लियर हो गया, डाउट्स क्लियर हो गए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. लेट्स मूव अहेड विद द अनदर सेट ऑफ अ क्वेश्चन विदाउट डिलेइंग मच टाइम. सो इट्स क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू. हियर वी आर गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 4. वाओ, अ गुड क्वेश्चन. In the following sequence of reaction P is, see, this is the question that has been asked in JEE Main 2021 Phase 4 Organic Chemistry, and it's a very good and a easy peasy lemon squeezy question. Okay? Yes, it is an easy peasy lemon squeezy question. So what should we do then? What should we do then? Just let me know. हाँ जी, बताइए इसका आंसर. क्या होगा इसका आंसर? Aakash says that it's option number C.
आकाश ने बोला इट्स ऑप्शन नंबर सी, विद्या ने बोला इट्स ऑप्शन नंबर बी. Okay, fine. It's a really good question. Who says it's option number B? Vidya says it's option number B. Is it Vidya? Will it be option number B? Aakash says option number C. Harsh says it's option number C. It's a question of Grignard reagent, an easy peasy lemon squeezy question. Okay, let's move ahead and talk about the same over here. Well, this is the thing we need to talk about. So, सबसे पहले अगर मैं A product की यहाँ पर बात करना चाहूँ आप लोगों से, for the A product, okay. So it's basically, I'll say chlorocyclopentane. It's chlorocyclopentane given to us. It's chlorocyclopentane given to us, which when reacted with magnesium in the presence of dry ether is gonna give us the Grignard reagent, corresponding Grignard reagent. Okay, corresponding Grignard reagent. Let me actually draw it nicely for you guys. Okay, fine. Okay. So over here it will be delta negative charge. And yes, it's MgCl with delta positive charge, isn't it? Yes, of course. So this is the Grignard reagent that has actually formed over here. Now, when this Grignard reagent reacts with ethanol, it's C2H5OH we are actually talking about. So what should I say? In ethanol, this particular hydrogen, if I actually account for, this is acidic hydrogen, isn't it? This is acidic hydrogen. This one is acidic hydrogen. So over here, what we can say in a way that acid-base reaction is going to take place. Acid-base reaction is going to take place. So यहाँ पर क्या हो रहा है? Alkyl part of the Grignard reagent. This is the alkyl part of the Grignard reagent. It actually picks up the proton from this ethanol. It actually picks up the acidic proton from ethanol, forming what? Cyclopentane as the major product. Fine. So over here, if I just talk about the major product is gonna be this. Major product is gonna be this. Cyclopentane plus its MgCl and its O C2H5. So this is our major product, isn't it? Yes, Sheilanath ji, absolutely fine. The ones who have said that it will be the cyclopentane, the major product, option number C. Option number C is the right answer. हाँ जी, बोलिए, कहिए. Energy high होनी चाहिए. You should be in an activated, energetic state. Don't be lazy. Have your mind and just lend me your ears for this session. Okay, and for all the sessions which I'm going to take in the future, near future. So here I am with option number C, the right answer for the question asked for. बोलिए, यार ये बहुत easy question था, है कि नहीं? Yes, it's option number C, the right answer. Moving ahead and let's talk about question number 5. Let's talk about question number 5. तो question number 5 क्या कहता है? Let me actually show you the question. In the following sequence of reaction, the final product D is what? Again a good question. देखते ही I believe आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है. What's gonna be the right answer of this question? बहुत अच्छा and easy question है. देख लीजिए. देखिए easy हम इसलिए कह रहे हैं because हमने अच्छे से preparation की हुई है. ठीक है? Yes. And obviously यार आप JEE means देने जा रहे हैं without preparation तो आप नहीं जाएंगे ना. आकाश says that it's option number D. आकाश ने कहा कि मैम इसका आंसर option number D है. अच्छा आकाश, fine. Let's see. Okay. Let's move ahead and talk about the answer now. तो ये मेरा terminal alkyne है. Terminal alkyne का reaction. Practice से शशांक. बिना प्रैक्टिस के तो यार कुछ भी नहीं है. चाहे आप मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू. जितने ज्यादा आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक्चुअल के अंदर अपने हाथों से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू गेट फ्रॉम वेयरएवर, यस यू नीड टू प्रैक्टिस. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कोई चीज जरूर फिट होती ही है. आई मीन टू से जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे दैट विल श्योरली गोना कम इन योर एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बन जाती है. जोड़ तोड़ का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि काफी सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर्स होता है एक क्वेश्चन में कभी कभार. यस, एब्सोल्युटली फाइन. ये जो NaNH2 है ना, ये हमारा बेस है. NaNH2 क्या है? ये बेस है. और ये जो टर्मिनल एल्काइन है, तो ये जो हमारा H है,
ये जो हमारा H है, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है भाई। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इट्स CH3, C triple bond, C negative and it is Na positive. This is what we are going to get initially, plus NH3, ये हमें इनिशियली मिलेगा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, फाइन, इट इज गोइंग टू अटैक। सी देखिए ये ब्रोमीन है, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये क्लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ये कौन सा रिएक्शन, हम किस रिएक्शन की हम बात करें, इट इज SN2 रिएक्शन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। ये हमारा SN2 रिएक्शन है जहां हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं अब B की बात करूं यहाँ पर, सो इट इज CH3, C triple bond carbon, then it is one CH2, other CH2, and then it is carbon, I mean to say CHOH, CHOH and it is CH3, ये हमारा B है, this is our B। अब ये जो B है, it undergoes hydrogenation in the presence of the catalyst palladium carbon, isn't it? Yes। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा C triple bond C है, it is going to reduce to CH2 and CH2, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है, प्रॉपरली रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, it is CH3, it's CH2, second CH2, then third CH2, fourth CH2 and it's CHOH and it is Me। क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लीजिए। यहाँ तक तो आई बिलीव क्लियर हो ही गया होगा, बहुत इजी था, ठीक है। इससे आगे भी इजी है। इट्स देन ट्रीटेड विथ CrO3, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री क्या है, एल्कोहल है। सो इट्स क्रोमिक एसिड CrO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल, इट इज एक्चुअली गोइंग टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो कीटोन में चेंज हो जाएगा। सो इट्स CH3, then second CH2, third CH2, 2 more CH2s to come, and then it's carbon C double bond O and CH3. So this is our major product. Yes, Mr. Harsh Kumar, absolutely fine. Here we are with our answer, option number A. It's CH3, CH2, 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 C double bond O, CH3. ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। यस मिस उमा यादव, बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े, ऑब्वियसली वी नीड टू मूव अहेड। यस, हियर वी आर विद क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए। Dear ones, if you like this session, hit the like button, share this particular session and subscribe करना मत भूलेगा, because if you want to attend the classes, then I'll just say and recommend you that do subscribe the channel for the further notifications. Talking about assertion and reasoning type of the question, assertion क्या कह रहा है कि synthesis जो है किसका, ethyl phenyl ether का, synthesis of ethyl phenyl ether may be achieved by Williamson synthesis, and the reason for it says reaction of bromobenzene with sodium ethoxide yields ethyl phenyl ether। तो बताएं इसका क्या जवाब है। मिस्टर आकाश ने कहा है, यस, आकाश क्या कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं मैम इट्स ए दैट इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अच्छा, वेरी गुड। सो let me know the answer. Thank you so much, Iconic, Aryan and Shilanath ji. Thank you. And Aakash is saying it's option number B. I have a doubt that what is ethyl phenyl. Let me tell you, I'll let you know about the things. Wait a minute. And first of all, I want the answers from you. Aishman says it's option number B. So 2 students are saying that it's option number B. That's gonna be the right answer. Okay, fine. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस की हम यहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पर पहले फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ में होगा एंड वी आर गोइंग टू गेट सोडियम फिनॉक्साइड। व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल फिनाइल ईथर। सो इन प्लेस ऑफ दिस R, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस व्हाट, ET, ethyl, and in the place of X, if we are going to place Br, ethyl bromide, then what's gonna happen over here? We are going to get ethyl phenyl ether.
It's O and ET over here. So it's ethyl phenyl ether. That is what we are going to get through Williamson synthesis. It's Williamson synthesis we are actually accounting for here for this particular thing. So we can say one thing that our option, not option, the assertion is actually right. Assertion बिल्कुल सही है. ठीक है. अब अगर मैं बात करना चाहूँ किसके बारे में, रीजन के बारे में. रीजन क्या है? रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथॉक्साइड. चलिए भाई, ब्रोमोबेंजीन की अगर हम बात करें, दिस इज आर एराइल ब्रोमाइड. हाँ जी बताएं. रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद व्हाट? सोडियम इथॉक्साइड. विद सोडियम इथॉक्साइड इट यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर. क्या यहां से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट इथाइल फिनाइल ईथर मिलेगा? बताएं मुझे. चंद्रशेखरन, Ayushman, Sheelanath, Aakash, just let me know. And the guys who are actually attending the sessions, just let me know, students. तो क्या यहाँ पर reaction होगा? Will the reaction take place? I'll say no reaction is going to take place. Aryl halides जो होते हैं, they do not undergo nucleophilic substitution reaction. वो nucleophilic substitution reaction नहीं शो करते. रीजन, यहाँ देखिए ब्रोमीन के पास में यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए कार्बन और हेलोजन के यहाँ पर वी डू हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर हमारा बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, वो टूट नहीं पाता है. इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज करता है. ठीक है, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ उसके हिसाब से इंक्रीज कर जाती है. इसलिए यहाँ पर इट इज नॉट गोइंग टू शो SN2 रिएक्शन. एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. इसीलिए जिन लोगों ने ये बोला है कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है मैम, तो मैं आप लोगों को कहूंगी आपने 4 मार्क्स अपनी पॉकेट में रख लिए हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर. हाँ जी, चले बढ़े आगे. Yes, here we are with question number 7 and let's go for question number 7 now. Here it is question number 7. तो question number 7 की अगर हम बात करें, the major product of the following reaction if it occurs by SN2 mechanism. मेजर प्रोडक्ट बताइए, मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए अगर हम SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो. सो जस्ट लेट मी नो. अच्छा, यहाँ पर एक बात बताएंगे, ये जो K2CO3 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जस्ट लेट मी नो, इस K2CO3 का क्या काम है? व्हाट्स द वर्क ऑफ दिस K2CO3? बताएं. आर्यन, हर्ष, आकाश, विद्या, come on, tell me. Basic. Okay, yes, ये बेस की तरह बिहेव करेगा. नहीं आयुष, ये बेस की तरह यहाँ बिहेव करेगा. It's going to be behave as base. ठीक है, तो ये बेस की तरह यहाँ पर काम करेगा. No, Mr. हरीश, न्यूक्लियोफाइल तो मैं यहाँ नहीं कहूंगी, बेस की तरह यहाँ पर ये बिहेव करेगा. तो अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये जो H है ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है. ठीक है, इट इज बिहेविंग एज अ बेस, सो इट्स गोइंग टू एक्चुअली टेक अवे द प्रोटोन. तो अगर ऐसा कुछ हुआ, सो देखिए इट्स OH, यहाँ आया ये हमारा बेस, एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट आर this particular ion, phenoxide ion. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, और इट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड. ठीक है, तो ये O नेगेटिव है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन. ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा एंड हेंस हमें हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा. कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये कैसा दिखेगा? इट्स O, देन इट्स CH2, फाइन, दिस वन इज CH2, देन इट्स CH डबल बॉन्ड कार्बन एंड वन मिथाइल ग्रुप ओवर हेयर एंड द अदर वन ओवर हेयर. तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है. दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, ओके.
Fine. No, Mr. Dhruv, not till now. चलिए आगे बढ़ते हैं. And here we are. So it's A, B, not A, not B. Rather, I'll say which particular answer we are going to have. Of course, Dhruv will actually do all the possible things you are actually asking over here with us. तो यहाँ पर, see, initially I have solved the question on the question page only. So wait a minute, this is our answer, ठीक है, and these are the options. So A option will not be the right answer. Rather I'll say it's option number B. That is gonna be the right answer. Yes, it's option number B, the right answer. So here it is option number B. It's option number B, the right answer. No, it's not option number D. You need to check it very carefully. It's option number B, the right answer. Deepa Kumar, Ayush, Ayushman. यार कर क्या रहे हैं आप ये बताइए? What have you done over here? Initially, hint तो मैंने आपको दे दिया था. K2CO3 is behaving as a base, so it is going to abstract the acidic proton. हमें मिलेगा phenoxide ion, which will behave as a nucleophile. It will attack the corresponding, I mean to say, alkyl halide, which has been given to us from the less sterically hindered position, and hence we'll be getting our corresponding major product. Yes, Aniket, it's option number B here. So I think there is nothing to make you understand for this particular question. It was very simple question to be asked for. But before I move, just make sure that you hit the like button, share this particular session, and do subscribe the channel for the further notifications of the classes. Well, my dear ones, अगर ये session आपको काफी अच्छा लग रहा है, feel that yes, there is something in this particular session to have in your mind, then please give me thumbs ups, okay? Hit the like button. So here I go with question number 8, and it's in front of you. So which one of the following chemicals is responsible for the production of HCl in the stomach, leading to irritation and pain? It's the factual question that has been asked, and I believe that every one of you knows the answer of this particular question. See, कुछ questions इतने scoring होते हैं, I mean to say कुछ chapters इतने scoring होते हैं कि जहाँ से straight away question आ जाता है, factual questions आ जाते हैं, जैसे कि chemistry in everyday life हो गया, ठीक है, biomolecules हो गया, fine. वहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं. अमीनो एसिड्स का जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स के क्वेश्चंस को देख लीजिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं. तो क्यों उन चैप्टर्स को छोड़ना, नहीं छोड़ना है. उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को हमें टिपिक एक्चुअल में याद करना है. इट्स एक्चुअली द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से एज इट इज अपने टिप्स पे कर लेने हैं. एंड यस माय डियर वंस, आपको बहुत अब टाइम मिल रहा है. द एग्जाम्स आर नाउ इन जून एंड जुलाई. सो देख लीजिए, सीधे सीधे 2 महीने आपको मिल रहे हैं. वर्क हार्ड, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. बहुत, जैसे मैंने आपको 2 चैप्टर्स बताए, उन चैप्टर्स को टिप्स पे कर लीजिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आएंगे. सो यस, आकाश says it's histamine. Absolutely Akash, the right answer is histamine. Histamines जो होते हैं, they are actually going to stimulate, I mean to say stimulate the secretion of HCl in the stomach. Factual question था. अब देखिए, हिस्टामिन पता है, इसको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए. मैंने पहले भी एक सेशन में कहा था, अमीनो एसिड्स जो हैं, करीबन ये मान लीजिए 20 अमीनो एसिड्स जो हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उनके स्ट्रक्चर्स को एक्चुअल में याद कर लीजिए, काम में आएंगे वो आपके. सो इट्स ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, हिस्टामिन. Fine. So yes, histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. Fine. So it was option number D, the right answer for the question asked for. Option number D बिल्कुल सही जवाब था, factual question था, time consuming भी नहीं था, है ना. चलिए, it's question number 9. Question number 9 की बात करते हैं. Here we are with question number 9. So it's a statement type of a question, no doubt. Ethyl pent 4-ine O8 on reaction with CH3 MgBr gives a 3-degree alcohol. Fine. Statement 2 क्या कह रहा है हमें? In this reaction, 1 mole of ethyl pent 4-ine O8. In this reaction, 1 mole of ethyl pent 4-ine O8 utilizes 2 moles of CH3 MgBr.
2 moles of CH3 MgBr। तो बताएं भाई, आशीष ने तो कह दिया है कि मैम इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आई मीन टू से आयुष्मान कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्या आपने इसको सॉल्व किया? डिड यू सॉल्व इट? डिड यू सॉल्व इट? निकिता कह रही हैं कि मैम इसका जो जवाब है सही वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ओके, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी, आई एम एक्चुअली गेटिंग द आंसर्स फॉर दिस। तो देखिए, इथाइल पेंट 4 OH का पहले तो आप एक तरह से स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है। लेट्स एक्चुअली गो विद द प्रोसीजर्स। सो अगर मैं इथाइल पेंट 4 OH, इथाइल पेंट 4 OH की बात कर रहे हैं। सो it's CH over here, triple bond CH, not CH, carbon, then it is CH2 pent, no, so it's 1 2 3 4 and it's C double bond O, okay, and it's OET, fine. So it's CH triple bond carbon, then 1 CH2, other CH2, C double bond O, OET, fine. This is ethyl pent. So it's 1 2 3 and 4 ine ethyl pent 4 OH, fine. So ethyl pent 4 OH on reaction with CH3 MgBr gives a 3 degree alcohol। हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए। सो चलिए, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट मोल ऑफ CH3 MgBr की, पहले मोल की बात करते हैं, इसके पहले मोल की बात करते हैं। सो ये क्या है? हमारा एसिडिक प्रोटोन है, ठीक है। तो ये जो पहला मोल होगा, इट इज गोइंग टू व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटोन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीथेन, ठीक है, मीथेन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देखिए, इट विल बी C नेगेटिव and it is MgBr positive, which we are going to get, fine. Then it's triple bond carbon, fine. Then it is CH2, okay. Then it's CH2 and it's C double bond O OET, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट मोल, ओके। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड मोल की ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr के सेकेंड मोल की अगर मैं बात करूं, नाउ इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन के पास आएगा, वापस से ये डबल बॉन्ड, वापस से नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे, इट इज गोइंग टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद कार्बन एंड ये OET विल लीव एज अ लीविंग ग्रुप। ऐसा ही होगा। Will this be the thing that is gonna happen? Yes, this will be the thing that is gonna happen. So हमें क्या हमारा आंसर मिलेगा? So it will be C carbon negative over here. It is MgBr positive over here. ठीक है? Triple bond carbon. Then it is CH2, other CH2. Then it's C double bond O, and it is CH3 over here. हमें ये मिला। अच्छा, अब अगर मैं थर्ड मोल की बात करती हूँ, if I just talk about the third mole, okay, if I am talking about the third mole, so it is CH3 MgBr, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, होना चाहिए क्लियर। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है विद अ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ आएगा, इट विल शिफ्ट ओवर हेयर लाइक दिस। तो हमें क्या मिलेगा? इट्स कार्बन नेगेटिव, it's MgBr positive, then it will be what? Triple bond carbon, then 1 CH2, another CH2, and it's C, it's O negative over here, CH3 over here, and CH3 over here. It's MgBr positive along with it. On acidic hydrolysis, we are going to get for sure the 3 degree alcohol. Yes, Joshua. What should I repeat? See, हमारे पास यहाँ इथाइल पेंट 4 OH है, एंड जब हमने इसका फर्स्ट मोल लिया किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इट रिएक्टेड विद द एसिडिक हाइड्रोजन गिविंग अस दिस पर्टिकुलर thing. Now when this reacts with the another mole of Grignard reagent, we are going to get the corresponding ketone. It is further going to react with the third mole of Grignard reagent, and hence on acidic hydrolysis further we are going to get 3 degree alcohol, which will look like it's CH
triple bond carbon, it's CH2, that's CH2, it's carbon, it's OH over here, CH3 and CH3. So this is the 3-degree alcohol that is we are actually going to get. So 3 moles of CH3MgBr is participating. So according to it, ethyl pent 4-inoate on reaction with CH3MgBr gives 3-degree alcohol. It's the true statement. Talking about statement 2, in this reaction 1 mole of ethyl pent 4-inoate, yes, 1 mole of ethyl pent 4-inoate, it is actually utilizing 2 moles? No, it is actually utilizing 3 moles of CH3MgBr. So statement number 1 is true and statement number 2 is false. That is the right thing to be said for this particular question. Joshua, what should I repeat for this? This is a reaction between what? I mean to say, herein we are actually talking about the reaction of Grignard reagent with the corresponding ester given to us. Fine. Anyone, any doubt? Fine. No doubts. Shall I move ahead with my question number 10 over here? Shall I move ahead? Just let me know. Yes, I just want the responses from you guys. किसी को कोई doubt हो, just let me know now here in the class itself. No doubts till now. Moving ahead with question number 10. And Joshua, let me tell you again, there is, I believe, will not be any doubt left for the question. It was a very easy peasy lemon squeezy question. I've repeated that for you too. Question number 10 in front of you, and here we are. Choose the correct name of the compound given below. Wow, that's a good question. And that's a very easy question from IUPAC nomenclature, isn't it? Yes, of course. So, बताइए, choose the correct name. You need to choose the correct name. You need to choose what? The correct name of the compound given to us. बताएं. Come on, dear ones. फटाफट से बता दीजिए. Come on, come on. Yes. I am just waiting for the answers. Come on. So here it is. ये compound हमें दिया हुआ है. Harsh says that it's option number C, ma'am. Okay, that it's 2E, 2 bromo, hex 2ene, 4-ine. Okay, you says this one. Fine. Option number C. Answers मुझे option number C के favor में ज़्यादा मिल रहे हैं. Vidya is also saying that, ma'am, it's option number C. Okay, Vidya, fine. Cool. So Aishman also says that, ma'am, it's option number C. So I should just look for the things to be talked upon over here. So let's talk about this particular question. तो चलिए, let's talk about the same. तो यहाँ देखिए, it's this and Br over here. Fine. Then double bond over here. Then this triple bond over here. Fine. So first of all, let's count how many carbon atoms are there. Fine. So it's 1 carbon atom, second, third, fourth, fifth, and sixth. Fine. So we do have 6 carbon atoms over here. So if we want to name this particular compound, so यहाँ पर देखिए, अगर हम इस साइड से चलते हैं, so ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आता है. अगर हम यहाँ से चलते हैं, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आता है. दोनों ही सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. लेकिन जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है एंड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है. So we are going to number from this particular side. It's 1, it's 2, it's 3, 4, 5 and 6. This is the way we are going to number now. Now what to do? See this carbon atom, if I just talk upon, for this carbon atom, fine. This bromine is the high priority group. Yes, this is high priority group. And this CH3, which is there over here, this one, this CH3 I'm actually talking about, it is the low priority group. Talking about this carbon which is involved in double bond. Fine. Now double bond carbon over here, and we do have one hydrogen attached to this carbon atom. Yes. And this is the whole group attached. So this is the low priority group and this whole group is the high priority group. This is high priority group. And what are they? They are actually, if I just talk about this particular carbon-carbon double bond, if I just talk about this carbon-carbon double bond, so yes, what I'm actually seeing is
that it's which particular thing we are talking about? Erythro, E we are talking about, that the two high priority group, they are on the opposite sides of the double bond. So erythro E we should say about it. Okay, so it will be twice of E. We can just account for, yes, we can say it's twice, not twice of E, it's 2E basically. Yes, erythro, yes. So Z configuration is when the high priority groups are on the same side, and E configuration is when the high priority groups are on the opposite side. So that is what we have written over here. So it's 2E dash, we can say it's 2-bromo, then it's hex 2E 4-ine, isn't it? Hex 2E 4-ine, fine. So over here यहाँ हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हमने नेमिंग की, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, सो यहाँ पर ई कॉन्फ़िगरेशन आएगा. सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू हैव ई कॉन्फ़िगरेशन, isn't it? Yes. So the answer will be option number C, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया. Okay, all of you. शीलानाथ जी ने आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया, जो कि गलत है. वेल, ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द राइट आंसर, आई मीन टू से ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर. फाइन डियर वंस, चलें आगे बढ़े, एंड हियर वी आर विद क्वेश्चन नंबर 11. फाइन, गुड. सो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, so this is the reactant given to us and the reagents too given to us. We need to tell the major products A and B in the following set of reactions are. ठीक है? Okay guys. तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ major product B जहाँ बन रहा है, so this is a kind of cyanohydrin we are having with us. It's a kind of cyanohydrin we are having with us. So when it undergoes hydrolysis, and that is basically यहाँ क्या हो रहा है, acidic medium में hydration. H3O positive की हम अगर बात करते हैं, so what we should say about it, acidic medium में hydration होना. And then it is H2SO4 which is actually a dehydrating agent. Yes, तो अगर मैं प्रोडक्ट B की बात करूं, जो कि मैं अभी करूंगी, वेट, बट दूसरी साइड देखा जाए प्रोडक्ट A के बारे में, इट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं. That means cyanohydrin has been actually reacted with lithium aluminum hydride. तो यहाँ पर जो lithium aluminum hydride की वजह से जो नाइट्राइल ग्रुप है ना, it is going to convert into 1 degree amine. हर्ष ने बिल्कुल सही बोला. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Well, these are the options in front of you guys. So बताएं, ऑप्शंस कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ आपको लग रहा है सही होगा. एल्कीन बन जाएगा बी में एल्कीन बनेगा. अनिकेत, यू आर एक्चुअली राइट. हर्ष कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी. चलिए, तो एक्चुअल में लेट्स सी व्हाट इज द प्रोडक्ट ए एंड बी. ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है. इट इज गोइंग टू रिड्यूस दिस नाइट्राइल इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग 1 degree अमीन. यस, तो यहाँ जो हमें आंसर मिलेगा वो देख लीजिए, इट इज CH2 एंड NH2. यहाँ हमें आंसर मिलेगा पहली बात. ठीक है, इट्स 1 degree अमीन वी आर एक्चुअली गेटिंग. फाइन. अगर मैं अब इसकी बात करूं तो सबसे पहले इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद H3O पॉजिटिव. एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन होना, सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इट्स CN जो इनिशियली कन्वर्ट होगा COOH ग्रुप में. तो देख लीजिए, यहाँ है हमारा OH एंड ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH. एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रेशन होना. ठीक है भाई, ये भी हो गया. अब क्या करें, इट इज H2SO4 विच इज गोइंग टू बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो हमें ये क्या मिला, एक तरह से इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिला. दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वी आर गोइंग टू गेट. अब हम इसका रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में कराएंगे जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो देखिए, what you need to see, यहाँ देखिए CH3, this is CH3 basically. ठीक है, तो ये यहाँ आएगा एंड इट इज गोइंग टू लीव. क्लियर है ये वाली बात. दिस इज अल्फा कार्बन एटम. फाइन. अल्फा हाइड्रोक्सी, ओके, इट्स अल्फा कार्बन एटम, इट्स बीटा बेसिकली. तो यहाँ से बीटा प्रोटॉन लीव करेगा एंड यहाँ देखिए अनिकेत ने जो बोला वो क्या बोला, एल्कीन बनेगा. तो यस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, C डबल बॉन्ड OOH, ये हमें मिलेगा.
रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलेगा. यस, फाइन, डन डन डन. एनीवन, एनीथिंग, नो डाउट्स. प्रबीर कह रहे हैं मैम आई डू हैव अ डाउट. Now tell me what's the doubt over here, since for this question I believe there shouldn't be any doubt. It's option number C जो कि हमारा सही जवाब है. It's option number C, the right answer for the question asked for. हाँ जी, बोलिए. Just let me know the things you are having within yourself. Just बताइए बताइए. चलिए, no doubts. Moving ahead and talking about question number 12 now. Question number 12 की बात की जाए तो here is the question. For the reaction given below. For the reaction given below. So this is a particular reactant which we are having with us. It's actually reacting with NaOH in heat and then it's acidic hydrolysis. The compound which is not formed as a product in the reaction is a. The compound which is not formed as a product in the reaction is a. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है? ये कौन सी पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है? शीलानाथ जी, विद्या, मिस्टर विकास, हर्ष, आयुष्मान, आशीष, जस्ट बताइए. आयुष्मान, आकाश, आशीष कह रहे हैं इट्स एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, कोई और जवाब? कोई और जवाब तो बता दीजिए, फटाफट से बताइए. Canizaro, Harsh says it's Canizaro, aldol and Canizaro. Well, I'll go for Canizaro reaction कि ये Canizaro reaction है. Canizaro reaction में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल, वैसे we'll be having two moles of this, two molecules of this particular reactant. एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा. This is what we actually talk about for Canizaro reaction. Yes, बेंजेल्डिहाइड के अंदर there is no alpha. Absolutely right, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं. Well, the question जो हमसे पूछा था, क्वेश्चन ने ये कहा पूछा था हमसे, the compound which is not formed as a product in the reaction. Compound which is not formed as a product in the reaction, is it a dicarboxylic acid, monocarboxylic acid, compound with both alcohol and acid functional groups or diol? कौन सा नहीं बना है वो आपको बताना है. कौन सा नहीं बना है वो आपको बताना है. ठीक है, चलिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चलिए चलिए चलिए. सो ओवर हेयर एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन होगा. तो कैनिज़ारो रिएक्शन अगर यहाँ हो रही है तो मैंने क्या बोला, यहाँ जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे व्हाट आर दे गोना लुक लाइक? अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो हमें ये देखिए डायोल्स मिले. एंड एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? इट्स COOH एंड इट इज CH2OH. हमें ये मिलेगा. तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक तो नहीं मिल रहा, मोनोकार्बोक्सिलिक मिल रहा है, डायोल भी मिल रहा है. कंपाउंड विद बोथ एल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप. ये एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. जेई ड्रीमर ने कहा है इट्स ऑप्शन नंबर ए. कैनिज़ारो रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन. तो ये हमें दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये पर्टिकुलर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर ये मिलेंगे तो ए जो है आंसर. अनिकेत ने कहा, आयुष्मान ने कहा, जेई ड्रीमर ने कहा इट्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच वी आर नॉट गोइंग टू गेट. चाहे कुछ भी कर लीजिए, इट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें नहीं मिलेगा. यस, हाँ जी, कोई डाउट किसी को? कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? मैकेनिज्म तो आई बिलीव आप लोगों को आता ही होगा अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन. जस्ट टेल मी. मैकेनिज्म में तो कोई डाउट नहीं है. इसके अंदर वी हैव एक्चुअली मूव्ड स्ट्रेट अवे टू द प्रोडक्ट्स. सिंस इट्स अ कैनिज़ारो रिएक्शन तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन एंड हेंस द आंसर इन आवर हैंड्स. आंसर हमारे पास में है. ओके, सो शैल वी मूव अहेड? कोई डाउट किसी को? Just let me know the doubts over here. Otherwise, I'll be moving on. Question number, it's question number 13 that is coming our way. It's question number 13 that is going to come our way. Here we go with question number 13. Which one of the following gives most stable diazonium salt? इनमें से कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड है जो हमें स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट देने वाला है?
स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट हमें किससे मिलता है? स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट हमें किससे मिलता है? ये जवाब आप मुझे दीजिए, कम ऑन। हर्ष, शिवनारायण, आयुष्मान, अनिकेत, विद्या, जस्ट लेट मी नो द आंसर। फर्स्ट में ऑक्सीडेशन हुआ या वो चीज तो खत्म हो गई ना? Okay, so you are saying Deepa Kumar that it's option number B. Israel is saying it's option number B. Aakash says ma'am it's option number B. अच्छा, ऑप्शन नंबर बी तो एक तरह से ऑप्शन नंबर बी, शुभम गर्ग भी यही कह रहे हैं, पंकज भी यही कह रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है, एनालीन में ऑप्शन नंबर बी। सो ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली फेवरिंग ऑप्शन नंबर बी, तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी आपके साथ ही चल लेती हूँ। सो यस, लेट मी टेल यू, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर ऑलवेज बीइंग गिवन बाय एरोमेटिक अमीन्स। ओके, आई विल से स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स हमेशा एरोमेटिक अमीन्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ N2 positive की resonating structures of benzene diazonium salt. Since a partial double bond character is present between carbon and nitrogen in benzene diazonium cation, the removal of nitrogen is difficult. The removal of nitrogen is difficult. ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, एंड यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये जो हमारा N2 ग्रुप है, इट इज एक्चुअली नॉट गोना बी रिमूव्ड इजीली, बहुत डिफिकल्टी होगी। और यही तो हमें चाहिए। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? C6H5N2 पॉजिटिव, तो येस वी वांट कि N2 ग्रुप वहां रहे, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से N2 जो ग्रुप है डू नॉट लीव। बेंजीन के पाई बॉन्ड्स जो हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड्स ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। सो इट्स absolutely aromatic primary amine, ठीक है। तो when it reacts with, when this aromatic primary amine की अगर हम बात करें, ठीक है, it's NH2 over here and it's CH3 over here, तो इसका जब रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl के साथ में करेंगे, we are going to get what? We are going to get N2 positive, Cl negative and it's CH3 over here। इट्स CH3 का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी यहाँ लगने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सो यस, इट्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। रेस्ट अदर्स की मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाली, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। हमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो भाई चाहिए ही चाहिए, ताकि N2 का रिमूवल नहीं हो सके। हेयर आई स्ट्रेट अवे ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मेहनत करना है। 2 महीने का टाइम और आपको एक्स्ट्रा मिल गया है फॉर योर JEE मेंस, एंड यू आर गोना रॉक योर JEE मेंस, ओके। यस, so it's question number 14. yes, the total number of negative charge, देखिए दोबारा से ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, and it's from amino acids. I was actually repeatedly saying कि भाई amino acids के structures जो हैं, कम से कम जो 20 essential amino acids हैं उनके structures तो याद कर ही लीजिए, बहुत काम में आएंगे। Total number of negative charge in the tetrapeptide, it's glycine, glutamic acid, aspartic acid, tyrosine, okay, at pH 12.5 pH पे हमें बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे इन दिस टेट्रापेप्टाइड। तो ये बेसिक मीडियम है बेसिकली, ठीक है, ये बेसिक मीडियम है, pH इज इक्वल्स टू 12.5। तो हमें क्या करना है, अगर ये बेसिक मीडियम है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक अवे द एसिडिक प्रोटॉन्स, तो वही हम यहाँ बात करने वाले हैं। सो इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रापेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड टायरोसिन, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर मैं एक चीज। इट्स ग्लाइसिन, ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, इफ आई एम जस्ट, इट्स NH2, ओके, NH2, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये जो पोर्शन है
it belongs to glycine, ठीक है, then it is NH, fine, and it's C double bond O. तो यहाँ देखिए ये वाला जो portion है it belongs to glutamic acid, it's CH2 and CH2 over here, ठीक है, clear है ये वाली चीज. आगे बढ़ते हैं, then it's COOH group. तो अगर मैं बात करना चाहूँ एक और चीज की, यहाँ it's C double bond O and NH, C double bond O NH. तो ये वाला जो portion है it belongs to what? This particular portion it belongs to aspartic acid, fine, and this particular portion it belongs to what? Tyrosine, fine. Doubts? No doubts, there shouldn't be any doubt. Wait a minute, it's NH, तो ये वाला portion हम कहेंगे, ये वाला portion, yes, okay, fine, now it's cool, now it's absolutely cool, fine. हाँ जी, yes, OH and COH जो है they are going to lose the protons. देखिए यहाँ से प्रोटॉन लूज होगा, यहाँ से प्रोटॉन लूज होगा, फाइन, यहाँ से प्रोटॉन लूज होगा, यस, यहाँ से प्रोटॉन लूज होगा. सो देख लीजिए तो कहाँ कहाँ से प्रोटॉन लूज हुआ है, it's 1, it's 2, it's 3 and 4. pH 12.5 basic medium going to take away the acidic protons. तो ये देखिए हमारे पास ये COH ग्रुप था, ये COOH ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, and this is OH group over here. So we are going to have total number of 4 negative charges in the tetrapeptide glycine, glutamic acid, aspartic acid, tyrosine at pH 12.5 will be 4. Your answer to the question is right, 4. अनिकेत, अंकित, इन सब ने सही जवाब दिया है. It's 4. 4 negative charges होंगे. Yes, आयुष्मान ने भी सही जवाब दिया. So herein we are straight away moving on to question number, which question number? 15. That means the last question of the session, isn't it? Yes, of course. So here we are with the last question. The total number of reagents from those given below that can convert nitrobenzene into aniline is. Nitrobenzene को aniline में हमें convert करना है, तो इनमें से कौन कौन से reagents वो काम करेंगे? Okay, we need to count we actually need to count what? We actually need to count the number of reagents that is going to convert nitrobenzene into aniline. Answers तो मुझे मिल ही रहे हैं, 5, 5, 5, 5. Okay, so यहाँ देख लीजिए, it's nitrobenzene which when reacted with hydrogen in the presence of rare and nickel or hydrogen in the presence of palladium. So over here, since I'll say, what should I say? Yeah, nitrobenzene जो है यहाँ पर इसका reduction होके we are going to get aniline. Then it's tin plus HCl reducing agent again, zinc plus HCl also aniline and Fe plus HCl also aniline. तो there are 5 reagents. अगर मैं बात करती हूँ SN in presence of NH4OH, तो भाई ये एक neutral medium है. This is the neutral medium. तो भाई कोई conversion तो होगा नहीं यहाँ पर. So it's 5 basically the right answer. समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें, सभी ने सही जवाब दिए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. गुड, वेल डन. सो डियर वंस, ये जो हमारा सेशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेज 4, आई बिलीव दिस पर्टिकुलर सेशन व्हेन इट केम इन JEE Means 2021, I actually just want to say the students would have been very happy with the chemistry paper. The questions were straight away, mostly they were easy. Okay, so you need to actually practice lots and lots and lots of the questions. Okay, we are here for you, fine, and we'll be boosting up your preparations for your coming JEE Mains 2022, June and July. So dear ones, stay tuned. Well, tomorrow sharp at 3 p.m. I will be back again with Inorganic Chemistry Phase 4 JEE Mains 2021 session. So be there. Don't miss the session. I want the full attendance of yours into my class. I just don't want any one of you should miss that particular Inorganic Chemistry session Phase 4. So here I just rest upon my case for this particular session. But before that, let me tell you one thing, that the upcoming session is of mathematics. Over here I'll just say it's basically today, not it was, I'll just say it's April 7. Find the upcoming session 5 p.m. sharp. Well, let me tell you one thing. Thank you for your cooperation. Thank you guys.
Okay, bye-bye. And yes, be there tomorrow sharply at 3 p.m. in the class. We're waiting for you. Bye-bye, guys. Thank you so much.